Yes, we are live. We can start the session. Perfect. That's great. Am I audible to everyone? Yes, sir. I'll take that. Perfect. Assalamu alaikum, everybody, and Bismillah Rahman Rahim. Many congratulations to all of you. I believe that this is all of you are people who've recently cleared your written exam, and nothing is cause of greater happiness as well as greater anxiety, I believe, than this result. So the good part about this result is that it gives you hope that all the effort that you've put in has actually borne you some fruit. But at the same time, it's also a very difficult stage, because I know a lot of people who start slacking when they get their interview result, or people who get their written result, or people who get a bit too overconfident, because in our minds, what is happening is that I stood in a pool of 20,000 people, and out of those 20,000 people, now I'm one of the only 300, 400, 500 people left, which means that, the bigger battle is behind us. That's not the case. The truth is that the bigger battle is in fact in front of us, because now वो जो एक luck factor जिसको हम कहते थे, या जिसको हम एक risk factor कहते हैं, या जिसके बारे में हमें ये होता है कि जी पता नहीं जी CSS के एग्जाम के अंदर कभी हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाता है, कभी कुछ लोगों का नहीं आता, बड़े लायक लोग रह जाते हैं, वो जो एक कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन और एक uncertainty की stage होती है, that uncertainty की stage is now over, and now you certainly know that it is going to be a very objective next stage in which three things will matter. Number one, your grip over your existing material. How much did you actually learn? जो आपने पढ़ा था, क्या आपको वो याद है या आपको वो नहीं याद? Number two, आपका demeanor. Do you appear to be an officer? Do you talk well? Can you communicate whatever you have learned? Can you survive under pressure? How do you react to strenuous situations? How do you react to being under the spotlight? All of those things come into play. So the first thing is your grip generally. Number two is your demeanor as an officer. And the third and most important thing is if you are able to convince the interviewer that you are well suited for the position that you're opting for the job that you're opting for. Luck factor बहुत minimize हो जाता है एकदम से, और luck को replace कर देती है आपकी मैं कहूँगा बहुत ही mathematical किस्म की ability. अगर मैं अपने interview experience की बात करूँ तो I scored 239 marks in my interview, and I didn't do it because I was a born orator or I was made to do this, born to do this thing. That wasn't the case. In fact, I had to sit with myself and curate each and every step of what persona I wanted to take with me into the examination hall. अब ये बातें मैं अभी बहुत तेजी से करता जा रहा हूँ, मगर हमारा एम ये है कि इंशाल्लाह आप में से वो लोग कि जो mentorship opt करेंगे through Napier for your interview, and you would want कि आपको at every step we groom you for the interview. आप लोग इन चीजों को फिर डेप्थ में मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे कि जब हम उस इंटरव्यू के अंदर स्टेप कर रहे हैं, जब हम उस कमरे के अंदर जा रहे हैं, तो हम असद या फिजा या मोहम्मद फैज आलम खान या मोहम्मद मुर्तजा बनकर नहीं जा रहे, हम एक आइडियल एंड परफेक्ट सिविल सर्वेंट, एक आइडियल एंड परफेक्ट ब्यूरोक्रेट बन के उस कमरे के अंदर एंटर कर रहे हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दैट probably जो अक्सर लोगों के साथ होता है कि वो CSS की रिटन की तैयारी करते करते किताबी कीड़ा बन जाते हैं. So the process of converting that किताबी कीड़ा into a polished and refined civil servant is a multi-pronged effort. आप में से जो अफजाई बातें आप सबने इस effort का
आपको स्टार्ट करना है, तो अगेन आई विल रिपीट, इस एफर्ट को जब आप स्टार्ट करते हो तो 3 चीजों पे आप खास तौर पे अब 3 डिफरेंट एंगल्स पे आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, और हम as part of our mentorship will work on all 3 of these separately. Usually I know students that they work only in 3, ये 3 का फिगर आप याद रखें, इन 3 में से people usually work only on the first one, which is कि जी मैंने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जितने ऑप्शनल्स थे, जितने कंपल्सरीज थे, क्या वो मुझे अच्छे तरीके से आते हैं, क्या वो मुझे अच्छे तरीके से याद है? This is one and very important part. But the truth is that even in this preparation is going to be completely different from the kind of preparation that you did for your written exam. In your written exam, you were supposed to know a lot of breadth of knowledge. आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि कोई भी सवाल आए तो आप उस सवाल का जवाब दे सकें। आपके पास रिटन में क्वेश्चंस ड्रॉप करने का मार्जिन बहुत कम होता है, आपने 4 सवालों के जवाब देने ही देने हैं, तो आपको इतना आना चाहिए मटेरियल, हर बारे में इतना पता होना चाहिए कि आप उनको जवाब दे सकें। इंटरव्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट। इंटरव्यू के अंदर आप 4 सवाल आपसे वो पूछते हैं, आप चारों के चारों ड्रॉप कर सकते हैं, मगर जो एक सवाल जिसका आप जवाब देंगे उसके ऊपर अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करे ना, क्रॉस क्वेश्चन इज समथिंग जो रिटन में नहीं होती, क्रॉस क्वेश्चन इज समथिंग व्हिच इज यूनिक टू द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए अपने सिलेबस की, अपने एकेडमिक साइड की तैयारी इस तरह डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, इन डेप्थ नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए कि अगर आपसे वो 18 सवाल पूछें और 18 के 17 उनमें से आप ड्रॉप कर दें, तो जो 18वां सवाल है उसमें आप अपनी डेप्थ ऑफ नॉलेज ऐसी शो करें, इतना आपको उस चीज के ऊपर कमांड और ग्रिप हो कि वो जब क्रॉस क्वेश्चन करें और जब वो आपकी स्टेटमेंट के ऊपर आपको ग्रिल करना शुरू करें, तो आप घबरा ना जाएं कि जो ओहो मैंने तो किताब के अंदर सिर्फ चैप्टर ही पढ़ा था और चैप्टर में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। रिटन में आपके पास ये गुंजाइश होती है, रिटन में आपके पास ये स्पेस होती है कि आप तो जितना आता है आप उतना बता दें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इंटरव्यू में आपके पास ये स्पेस नहीं है। इंटरव्यू में अगर आपको कोई भी सवाल आता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर इस सवाल के ऊपर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन हो गया, अगर इस सवाल के ऊपर मुझसे कोई ग्रिल कर लिया मुझे, अगर इसके ऊपर उन्होंने मुझसे कोई बहस शुरू कर दी, मुझसे कोई डिबेट शुरू कर दी, तो मेरे पास इतना नॉलेज हो कि मैं उसका एक एजुकेटेड जवाब दे सकूं। और मेरा अपना ये जाती ओपिनियन है कि आप अगेन 18 सवालों में से 17 ड्रॉप करने पर 18वें के ऊपर एक अच्छी पढ़ी लिखी बात उनके साथ कर लें तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है। So the 3 things that I'm talking about that every one of you needs to work on as part of your interview prep. The first one is knowing the syllabus, but knowing the syllabus not from the angle of the written exam, not in the style of the written exam, but in the style and angle of the interview. A space where you need deep analysis, where you can be cross-questioned, where you can be grilled, where you have to engage in debate, and to be able to then make that debate. And this comes not just with knowing the material, but also practicing. कि आप इतना ज्यादा किसी के साथ बात करें। हम में से कई दोस्त हैं जो अंग्रेजी के अंदर लड़खड़ा रहे होते हैं। भी कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त को मेंटोर कर रहा था और वो उर्दू में बहुत कंफर्टेबल था बोलने में, उर्दू में बहुत अच्छी बात कर रहा था, उर्दू में उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर थे। जब वो इंग्लिश में बोलने पे आता था, लिखने को आप उससे 1000 सफा अंग्रेजी का लिखवा लें, किताब लिखवा लें, बोलने के ऊपर वो उसकी जबान लरज जाती थी, लड़खड़ा जाती थी। और वो लड़खड़ाहट हमने अवॉइड करनी है, उसको हमने ओवरकम करना है with practice. So the first thing is your content, is your knowledge, is your syllabus. The second thing is your demeanor. How do you speak? Are you crisp? क्या आप अगर 30 सेकंड के अंदर आपने उनको एक चीज का जवाब देना है, आमतौर पे आपके पास 30 सेकंड होते हैं जवाब देने के लिए। 30 सेकंड के अंदर अगर आप तमहीदी बांधते रह गए, अगर आपका बोलने का जो जवाब है वो स्ट्रक्चर्ड ही ना हुआ, अगर आप यू बीटिंग अबाउट द बुश, हो सकता है आपको बात पता हो। मैंने महीना पहले एक और बंदे को मेंटोर कर रहा था और ही न्यू एवरीथिंग, बट जब वो बोलने लगता था तो वो जिस तरह हम रिटन के अंदर पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मेन डेफिनेशंस देते हैं, फिर मेन बॉडी देते हैं, वो बोलता भी उसी तरह था कि सर दिस मैटर हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री,
और फिर वो बड़ी तमहीद बांध के फिर पॉइंट पे आता था. उसके पॉइंट पे आने तक इंटरव्यूअर would have lost him. You need to again be mentored and practice and learn the art of how you're going to talk to them crisply in 30 seconds in such a way that you are able to convey the crux, the main point that you want to say, and prove to them that you know the answer in 30 seconds. आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मजीद आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि 30 सेकंड के अंदर अपने मुद्दे के ऊपर आकर उसको एक्सप्लेन करना जो है वो जारी बात है इतना आसान काम नहीं है. सो द सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स हाउ यू स्पीक, आपकी अंग्रेजी, आपका मुद्दे पे आना. और तीसरी और आखिरी चीज है आपका डिमीनर, आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या उनको आप अपनी साइड पे ला सक रहे हैं, क्या आप उनको ये इमेज दे सकते हैं कि आप पुलिस की या पैस की या MLCG की या इनकम टैक्स की या कस्टम्स की या पोस्टल की जिस भी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप उसके लिए वेल सूटेड हैं, आप उसके लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं. डू यू गिव दैट वाइब? सबसे जरूरी चीज जो इंसानों में होती है ना वो एक वाइब होती है. कई दफा होगा कि आप किसी इंसान को मिलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कई दफा होगा कि आप किसी इंसान को मिलेंगे और आप कहेंगे ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. सो जो अच्छा लग रहा है और जो बुरा लग रहा है उनमें हो सकता है कोई फर्क ना हो, सिर्फ ये कि किसी के साथ आपको फीलिंग अच्छी आती है और किसी के साथ आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती. दिस इज वेरी ह्यूमन थिंग. द इंटरव्यू इज अ ह्यूमन drama in which you are one character and the panelists are the other character or the other players, and you have to stage it in such a way that you give off the impression of being the ideal civil servant. How you do that? It's like going to a theater class कि जैसे बंदा थिएटर सीखने जाता है, जैसे बंदा एक्टिंग सीखता है, उस तरीके से you need to learn the art of the interview on how to carry yourself, how to convince your interviewer that you are in fact the right candidate for the job. So these are the three things: your syllabus, your delivery, and your demeanor, or your image as an ideal civil servant that you need to convey to them. And these are the three things that any program that you opt for, कहीं से भी अगर आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू करते हैं, these are three things that you should make sure कि आपको वो करवाएं. इंटरव्यू के अपने 3 स्टेजेस होती हैं. पहले एक मेडिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है और एक असल इंटरव्यू होता है. मेडिकल जो है वो रूटीन में हो जाता है, उसमें आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. वो आपको आधे पौने घंटे के अंदर ही मैं या कोई भी बंदा बता देगा कि उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किधर जाना है. दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट. साइकोलॉजिकल में काफी सारी चीजें होती हैं. इम्प्रॉम्प्टू उर्दू स्पीच, इम्प्रॉम्प्टू इंग्लिश स्पीच. एक चीज होती है उसको हम कहते हैं कमांड टास्क, जिसमें आपने एक मीटिंग कंडक्ट करानी होती है. उसके बाद आपका एक साइकोलॉजिकल का शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, कुछ क्विक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. सो 2 दिन का साइकोलॉजिकल होता है जिसमें यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. अच्छी बात यह है कि विद एम्पल प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू एस योर साइकोलॉजिकल. बुरी बात यह है कि साइकोलॉजिकल में अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं जाकर तो बोंगियां मार के छिकाऊंगा, ऐसे नहीं होगा. अगर आप साइकोलॉजिकल के अंदर जा रहे हैं, हुआ आपका स्पीकर ऑन हो गया. अगर आप साइकोलॉजिकल के अंदर जा रहे हैं तो until and unless you are completely at peace with your mind and you know exactly what you're doing, you will not be able to do well. So psychological is a tricky part, but also ये मैथ के सवाल की तरह है कि अगर आपको आ गया तो आप 100 में से 100 ले जाएंगे, और अगर आप अड़े तो फिर एडवर्स रिमार्क्स आपके चले जाएंगे. तीसरी और आखिरी चीज इज द मेन इंटरव्यू. मेन इंटरव्यू के लिए मैंने जैसे आपको बताया 3 चीजों के ऊपर कोई भी मेंटर आपको फोकस करेगा, और जहां पे भी आप मेंटरशिप के लिए जाएं, मेक श्योर दैट you always ask them for these 3 things. What I will be trying is that on a personal level I'm able to mentor as many of you as possible. I will do one-on-one sessions online as well as in person if required, and we're also developing some tools on Nearpeer so that we will have a pool of questions that you can then record yourself answering, and then we can also evaluate how well you are doing, and then you can also self-evaluate yourself. This was a particular question that's very likely to come up in the interview, and I did well on this or I did badly on this. So it's that's the idea, and yeah, that's about it. I think I'll keep it brief and brisk,
If there are any questions, and I'd love to take questions from you. Let's take questions for another 5-10 minutes. Hello. जी सर, स्टूडेंट आपसे अभी क्वेश्चन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम उनको अलाउ करते हैं टू स्पीक अप. Perfect. If anybody has any questions or anybody wants to share anything or any apprehensions or anything at all, because I've kept this very quick. I don't want to waste a lot of your time. I know these are tough times to be, and you're all pressed for time, so we'll just keep it very brief. Aap bataएं if anybody has any questions. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I've not studied after the exam. What should I do about it? I'm very confused. So one thing that you can do about it is don't go back to the original books. Just have a look at your notes, and that should be sufficient. I always say that as important as it is, as I said, there are 3 parts to this, right? Your knowledge of your subject is only one part of it. The other 2 parts are how you present yourself and how you say what you have to say. So your delivery part and your being the ideal civil servant part. And being an ideal civil servant, मैं कहने में शायद इसको emphasize नहीं कर पा रहा कि कितनी complicated बात है. This is a very complicated act because इसके अंदर you need to answer all the questions about yourself. So for example, Asad, why do you want to join the civil service? सुनने में बड़ा आसान सवाल है पर बड़ा मुश्किल जवाब है इसका. अगर आप कहेंगे because I want to serve the nation, तो भाई ये सवाल जवाब तो अगर उनसे 400 बंदे का वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो 400 का 400 उनको यही जवाब दे रहा है कि I want to serve the nation. आपका जवाब बेहतर कैसे होगा? वो बेहतर ऐसे होगा कि जब आप उस जवाब को अपनी जिंदगी के साथ लिंक करना सीखेंगे. उसको लिंक कैसे करना है वो एक आर्ट और साइंस है in itself. So your syllabus is only 1/3 of your interview prep. 2/3 are other things. Working on yourself, working on your delivery, working on your style. Those are 2/3 of the interview. जहां तक इस 1/3 की बात आती है कि सिलेबस का क्या करना है, my recommendation is just go through your notes in about 2 weeks. Quickly अपने notes देख लो, बिल्कुल और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. Notes देखो और discussions करो. Meet like-minded people, meet friends, उनके साथ बैठ के discussions करो, mock interviews दो, mock questions answer करो. इससे सारा आपका process जो है वो तेज हो जाएगा. I don't know which city you're in, and I don't know which city they'll be going first, but if you have your interview in December, so you just have 3 months left. 3 months में से syllabus को आप 1-1.5 महीने से ज्यादा का time नहीं दे सकते. मैंने इतना ही दिया था तकरीबन. So I hope that answers your question to some degree, but don't worry about it. It'll inshallah happen. Okay, thank you. Anybody else? Aftab, Ayman, Hafiz Naseem, Homa, Mashood. I don't know if this Mashood is the Mashood that I know or some other Mashood. Muhammad On Gondal, Muhammad Faiz Alam, Rida Vakar, Sayyid Kumail Haider, Usama Ali. शुक्र करो ये मेरी क्लास नहीं है और ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, वरना मैंने सारों के कैमरास ऑन करवा के तो एक एक करके सारों को एक मॉक क्वेश्चन देना था और कहना था इस क्वेश्चन को आंसर करें. But I'm glad that you guys are here. So if there are any more questions, I think we'll take those, and otherwise Hasib, what do you recommend? Mashood? सर इनका एक क्वेश्चन आया है चैट में. अच्छा मशहूद आप बताओ, फिर हम चैट भी देख लेते हैं. So do we need to revise our graduation subjects again? On Gondal ने सवाल पूछा है कि do we need to revise our graduation subjects? तो on yes, in the sense कि again ये नहीं कि आपने 4 साल में जितना कुछ पढ़ा है आप सारे के सारे को दोबारा रिवाइज करें, बट इस हद तक कि आपका जो डिग्री थी उस डिग्री के बारे में आपको एक कॉन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए. देखो दी इंटरव्यू ना हमारे यहाँ, आप लोग भी ये गलती शायद कर रहे हो, आप लोग इसको बहुत एकेडमिक सेंस में लेके जा रहे हो कि जैसे रिटन की तैयारी होती है कि ये सिलेबस है हमने इसकी तैयारी करनी है. ऐसे नहीं है. इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन, गुफ्तगू है. आपको इतना पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में कि आप उस सब्जेक्ट के ऊपर एक गुफ्तगू कर सको, एक आलिमाना फाजिलाना पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर सको. So that's
That's the idea basically. I know Mashood Ahmed had a question. Mashood, what was your question? Assalamu alaikum, sir. Am I audible? Yeah. Sir, my question is that एक candidate है जो interview में 190 और 200 score करता है, and another one scores 230 plus 240. So what will be the difference between these two candidates? सादे से लफ्जों में कि जिसने अपने आप को उधर, अच्छा मैं बताता हूँ आपको, आपने फिल्में देखते हो? Yes, sir. और YouTube की वीडियोस भी देखते हो? सर बहुत ज्यादा। टिकटॉक, अच्छा। अब टिकटॉक के ऊपर जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं और फिल्म के अंदर जो कोई अच्छा हीरो एक्टिंग कर रहा होता है, उन दोनों में क्या फर्क होता है? सर फिल्म्स वाले मोर प्रोफेशनल होते हैं, ज्यादा वेल ट्रेन्ड होते हैं। नहीं, उसमें फर्क ये होता है कि जो फिल्मों वाला है वो आपको कन्विंस कर देगा कि वो उस कैरेक्टर में रचा बसा है। फैसल कुरैशी की एग्जांपल लो, ड्रामों का हमारा एक एक्टर है, आई डोंट नो आपने उसको देखा है कि नहीं देखा हुआ है, जानते हो फैसल कुरैशी? यस सर, यस सर। अब फैसल कुरैशी की अमेजिंग बात यह है कि वो छिछोरा लड़का बने तो बड़ा अच्छा बनता है, जमींदार बने तो बड़ा अच्छा बनता है। उसको आप जिस रोल में फिट करते हो, शहरी बंदा बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, जो भी रोल में आप उसको फिट करते हो, आपको उसको देख के लगता है कि हाँ यार ये इसी रोल में फिट होता है। जबकि अगर आपने टिकटॉक के एक्टर्स देखो तो वो बातें और तरह से कर रहा होगा और ट्रेंड कोई और रोल कर रहा होगा, उसका मतलब वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा कि वो उस रोल के अंदर है कि जो रोल वो पोर्ट्रे करना चाह रहा है। An average interview and a good interview has two differences. The bigger difference is that in average interview mein the interviewee has failed to convince the panel that he fits into the role of a good civil servant. That's it. आप उन्हें convince नहीं कर पाए कि मैं एक अच्छा civil servant बनूंगा। कैसे convince नहीं किया? That brings us to part 2. हो सकता है कि आपको अपनी बात, अपने जहन के ख्यालात, अपनी डेप्थ ऑफ थॉट उनको कन्वे ही ना करनी आई हो। जब आपको ये कन्वे करनी नहीं आई तो आप गए। 3 तरह के इंटरव्यूज होते हैं, बहुत अच्छे, एवरेज और बुरे। एवरेज वो होते हैं जो नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं। बहुत अच्छे वो होते हैं कि जो बिल्कुल अपने आप को एज एन आइडियल सिविल सर्वेंट उनको प्रेजेंट कर देते हैं। और बहुत बुरे वो होते हैं जो कोई एक आध ऐसी हरकत कर देता है कि जिसमें इंटरव्यूज को उस पर तब चढ़ जाती है। और इसके ऊपर मैं आपसे 10 घंटे बहस कर सकता हूँ कि वो क्या क्या चीजें हैं। और मेंटरशिप कोर्स का मकसद भी यही है कि आपको एक एक करके वो चीजें आपकी प्रैक्टिस में से हटाई जाएं कि जो इंटरव्यूअर को तंग कर सकती हैं, पिस ऑफ कर सकती हैं, गुस्सा दिला सकती हैं, नाराज कर सकती हैं, या उसको ये महसूस करा सकते हैं कि ये बंदा इस नौकरी के लिए दुरुस्त नहीं है। I think we have one more question. So a good introduction constitutes of which things? A good introduction constitutes of your ability to convince the interviewer that you are the right person for the job. It includes your story and something that relates your story with your job. Why do you want to do this job? Why do you think you're a good civil service match? That's the best introduction. So my introduction, for example, was that I didn't tell my name because they already knew it. I was like, they were like, introduce yourself. I was like, sir, I'm an aspirant for the civil service of Pakistan with a dream of helping make my contribution to the education and social services environment of this country. And I wish to do this because I have been very blessed throughout my life. I went to a very prestigious school. I went to a very renowned university, and this country has given me a lot. It has given me not just an identity, but it has given me a very good quality of life. And I feel obligated to extend this privilege and this good quality of life to as many of Pakistan's citizens as possible. So this was my introduction, roughly. Thoda sa different tha, 5 saal pehle ki baat hai, but roughly it was something along these lines. So, and I actually, this was something that comes with conviction. It's not something that you just pretend to be. It's something that you need to really believe in. So be authentic, be yourself, say things that you actually come from your heart. Don't say things जो आप रट लेते हो क्योंकि आपने 36 लोगों को वही बात करते सुना है, या आपको एकेडमी में किसने कहा था कि ये तरीका, ये वाली बात करें तो सही होती है.
बातें ऑथेंटिक होनी चाहिए और आपके दिल से आनी चाहिए। और जब आप किसी मेंटर के साथ, किसी भी मेंटर के साथ, नॉट जस्ट किसी भी मेंटर के साथ अटैच होके अपने बारे में सोचोगे, यू विल इंशाल्लाह कम टू दैट रियलाइजेशन। Great. I think we've done some discussion here, and we're out of questions. If there are any more questions, I'm giving you another chance. Chalo, that's great. The near peer interview series is going to consist of complete review of your syllabus so that you can make sure that you don't forget anything, you've covered everything. One-on-one personalized mentorship in terms of how do you convince the examiner that you are the right fit. So it's personalized. Personalization means that you will be able to, do a right job. Third is practice, practice, practice. We will give you mock scenarios, etc., so that you can actually feel comfortable talking more and more, and be able to record yourself. And we can also review that, and you can also self-review yourself. So that's the idea. We shall be starting, inshallah, in a day or so, depending on how many people we have interested. I want to restrict the number to about 10, ideally, so that we only have we can give you personal attention, each and every one of you. So that's about it. Alaikum, sir. May I ask you a question, please? Yeah, sure. Sir, I have discussed the time I got my result. I discussed with my seniors who got allocated, and they told me one thing. The most important factor which they said was the how you have the time with psychologist, and that particular session matters the most. See, the whole point is this, that everyone has a flaw in it. Every single personality does have it. But how we can actually make sure that that particular thing does not get highlighted into the interview? Because I've seen very good candidates, but due to the one which I've learned from my seniors, they have told that they've seen very good candidates and they were not able to make it to even allocation. The whole point lies into that they didn't have the good time with psychologists, and they were not able to actually, you can say, I would be very honest, irrespective of everyone goes to the academies. That's very an honest thing. But the whole point is this, that if you're not able to actually rectify yourself, and irrespective of that, once you go to the academy and you meet different psychologists, how you're able to make sure that the thing which you're presenting yourself over there is the right person? I believe that we would be a fabricated person after going to academies and everywhere. We won't be able to put out the best of what we are. No, I get your I'm question, really Faiz. confused about the whole fact. Let me answer that. You're absolutely right. So अगर आप बिल्कुल एक मोल्ड में, एक ऐसे मेंटरशिप में चले जाते हो जो आपको रटे रटाए जवाब कराना शुरू कर दें, तो वाकई ऐसे होगा। पर बहुत Hello.
जी हसीब भाई, इशू हमारी तरफ है कि सर की तरफ हो गया? मुझे लग रहा है सर की तरफ इशू आ रहा है। सर ड्रॉप हो गए मीटिंग से, मैं उनको दोबारा कनेक्ट करने की मैंने कोशिश कर 3 इंटरनेट चेंजेस कर लिए हैं उसी टाइम के अंदर, मुझे लगा मैं ड्रॉप हो गया। जी। मैं खुद वही देख रहा था, मुझे लगा मैं भी इशू आ गया है, सर की तरफ इशू है। मैं भी चेक कर रहा हूँ, मैं सर को कनेक्ट करता हूँ दोबारा। चले, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। जी जी जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा आप। फैज आई एम ट्राइंग सर से कांटेक्ट हो जाए, तो सर अभी कॉल पिक नहीं कर रहे। मैं जरा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। परफेक्टली ऑल राइट। फैज सर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अगेन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हो जाए, तो आई लेट यू नो क्विकली। So do you want us to leave the class or stay in the class? फैज आप 2 मिनट वेट कीजिए, कोई मैं मसले सर वाली से बात नहीं, connect आप करने की कोशिश कर परेशान रहा ना हूँ। हो, आप जस्ट मेक श्योर आप आराम से बात कर लें, दैट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, कोई इशू नहीं है, वी आर वेटिंग। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं कांटेक्ट करके आपको अपडेट करता हूँ।
अच्छा फैज, मेरी बात हो गई है सर से, वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि सेशन कंक्लूड हो गया है, स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो ही वाज तो मैं तो वो बात करते करते उनका वो ड्रॉप हो गया था। जी, तो ये जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, इफ यू आर लिसनिंग मी काइंडली सर से क्वेश्चन कीजिए यार, इसमें इतने मजे की अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, प्लीज ट्राई टू कम्युनिकेट। लगता है मुर्तजा भाई गुस्सा कर रही है। शायद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उन्हें कहें सर आप तो क्वेश्चन का जवाब देते जितने चले गए थे। नहीं, वो सर को लग रहा होगा कि कंक्लूड हो गया, तो अभी वो दोबारा कह रहे मैं नहीं, ज्वाइन कर रहा हूँ, तो होपफुली अभी आते हैं, तो फिर आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। जी सर, मुर्तजा विल बी जॉइनिंग अस अगेन। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लें, एंड वी कैन आस्क देम क्वेश्चंस। आई थिंक यस, द इंस्ट्रक्टर इज हियर। जी गाइस, प्लीज आप लोगों के जो भी ठीक है। क्वेश्चंस हैं वो पूछें। सर मुर्तजा हैज जॉइंड अस। किस किस का क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड। वेयर इज द रेजिंग हैंड? वैसे ही बोल दें यार, थोड़े से तो लोग हैं, बताएं। सर आप इंडिविजुअल मेंटरशिप का फायदा यही होता है कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर लाइक द होल वर्ल्ड टू स्पीक फर्स्ट, यू कैन जस्ट। सर आप बता रहे थे साइकोलॉजिस्ट वाली बात, एंड द कॉल ड्रॉप दैट आउट। अच्छा, उसमें मैं कह ये रहा था कि यार देखो, जब आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे मैस प्रोडक्शन होगी, तो वहां पे तो इस तरह के मसले आएंगे, ठीक है? ये आपकी अकल का तकाजा है कि आप किस तरीके से rather than falling into one of those mass production things, how do you make sure that you are able to keep that individuality? A lot of mentorships are available, such as this one that we're trying to do, in which rather than giving one answer to all 10, 15, 20, 30 students, we actually sit with everyone and decide that, okay, on an individual level, how can we tailor this answer to you? जिस तरह CSS का रिटन होता था ना, उसमें एक जनरल फॉर्मेट था जो सब फॉलो करते हैं, सब इंट्रोडक्शन देते हैं, सब कंक्लूजन देते हैं, सब मेन पॉइंट्स देते हैं, सब एनालिसिस देते हैं, ये सब फॉलो करते थे। अब उसके अंदर within that framework, how do you set yourself apart? How do you become authentic to yourself? Written में authenticity की इतनी गुंजाइश शायद नहीं थी, इंटरव्यू में है। इंटरव्यू में you can be an entirely yourself and an authentic self. But how do we make sure that your authentic self अगर एक lazy और boring इंसान है, या lazy और uninteresting इंसान है, so how do we make your authentic self somebody who's not lazy and like that? That process takes individual counseling. We sit together and we, if all of you have cleared your written exam, I'm sure that you have passions in life. I'm sure that you have motivations in life. I'm sure that you know what is right and what is wrong. I'm sure you have some direction of where you want to see this country go, of what contribution you want to make in this country. So I'm sure that essentially all of you have that in you. Just don't fall for that one idea fits all kind of thing, or and you will find that place. फेक होना जरूरी नहीं है। फेक जब इंसान होता है ना, तो फौरन पता चल जाता है। जिस सेकंड आप फेक होते हैं, लोग बता सकते हैं। लोगों को आपकी बात ही पसंद नहीं आएगी जब आप फेक होंगे, पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है कि इस वक्त ये बंदा बिल्कुल बनावटी बात कर रहा है। सो you need to be convinced about everything that you say in the psychological, especially. मैं पिछले हफ्ते किसी के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है कि जिसको आपने कभी माफ नहीं किया? तो मैंने उनको कहा कि मैं जब साइकोलॉजिकल के लिए जा रहा था, तो मैंने ये ट्रू स्टोरी है मेरी अपनी पर्सनल, आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने साइकोलॉजिकल में जाते हुए एक दो दिन पहले उससे बैठ के सोचा कि यार मुझे किस किस से जिंदगी में गिला है, और मैं सबको जेन्युइनली दिल से माफ करके जाऊं, क्योंकि अगर मैं दिल से माफ नहीं करूंगा ना, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई बात मेरे जहन में है तो साइकोलॉजिकल में निकल जाएगी। मैं अपनी ट्रू जेन्युइन स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप जब साइकोलॉजिकल में जाते हो, बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ, बट डोंट बी स्टूपिड। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दिस इज अ बैलेंस, जो मैं शायद बात करके आपको समझा ना पाऊं, आप किसी से सुन के समझ ना सको, जब तक कि आप बैठोगे नहीं और अपनी जिंदगी के बारे में सोचोगे। एंड वी हैव अ फ्यू एक्टिविटीज
that can help you sort that out. I can also give you a hint right now. Just think of your entire life. Think of your strength. Think of your entire life. Think of your strengths and think of your weaknesses, and that should do the trick. That should bring out that authentic self of yours. I hope that answers some of your questions. That's good. Yes, sir. Thank you with this one. Is sir there or he left? I think probably he left. Okay, then it's perfectly all right. Hasib bhai probably sir left. जी मुझे लग रहा है सर अगेन उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया है